Okay, fine. So, okay, good morning again. Let's start with the topic. We were talking about presentation software, right? So, we'll move on with the presentation. Presentation में हमने basic चीज़ें की थी, file, menu के options and all. And today we are going to start with views menu, views tool. So, I'll quickly move on to the book first of all. Okay. So view tab consists of the commands required for viewing the current document on the screen. How will you view the things on the screen? So there are different ways of representing things, different way of representing the slides and the content on the slides on the screen. So ये सारे views अलग अलग हैं, अलग अलग तरह से हम लोग slide में जो content है उसको show कर सकते हैं. That can be done with the help of this view tab, right? The commands which are available, we'll just go through one by one. The very first thing is written is normal. ये जो normal है, ये normal basically जो हमारा default format दिखता है जब आप presentation को open करते हो. Whenever you open Impress, तो जो आपको default setup दिखता है, that is the normal setup. That is a normal view. We have the slide in the center. On the left side, we have the slide pane. On the right side, we have the properties option. So जो normal हमें दिखता है वो slide है. Basically इसका काम है so that people can type the things in this way, right? तो जो data enter करने का जो option है वो normal view में मिलता है. We use it for writing and creating the slides. Second option is the outline view. Outline view will only show you the text of the slides. It will not show you the other part of the slide. सिर्फ आपको text दिखाएगा, slide जो है वो hide हो जाती है. Then we have slide sorter view, in which you'll find the slides comes as a miniature form. छोटे छोटे miniature form में slides दिखती हैं, right? This help us to arrange the slides or move the slide from one place to another. ये हमारा normal view है, ये हमारा notes outline view है, where only text is shown, and this is the slide sorter view, in which you can see small slides are there. Any problem? So which software we can download in the phone to get Word and Excel? See, Word and Excel, it is available on phones also. You can download directly. Word आप वहाँ Microsoft के ही सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, बट हमारा जो है वो ओपन ऑफिस है. ठीक है, जो सिलेबस कंटेंट में वर्ड और एक्सेल नहीं है, यहाँ पे ओपन ऑफिस है. तो ओपन ऑफिस आई एम नॉट श्योर कि उसकी ऐप है कि नहीं. सो आई सर्च ऑन दिस एंड लेट यू नो. मैं बता दूंगा, ग्रुप में मैसेज डालता हूँ. ठीक है. Okay, so this was the slide sorter view, where this we can see only the miniature form of the slides, and that can be helpful for arranging the slides. मान लो अगर आपको एक स्लाइड को मूव करके फर्स्ट स्लाइड पे लेके जाना है, यू वांट टू मूव फर्स्ट स्लाइड टू द लास्ट स्लाइड, तो ये मूव करने का जो ऑप्शन है यहाँ पे इजीली हो जाता है. यू कैन इजीली टैकल दीज मूवमेंट ऑफ द स्लाइड्स. The next we have this notes view. Notes view में क्या होता है कि that you can add some notes at the bottom of the slide. ठीक है, नीचे notes हम वगैरह हम डाल सकते हैं. अब this notes are basically used by the presenter only. We cannot ये notes आपको presentation पे नहीं दिखेंगे. जब आप slides को चलाएंगे तो वो basically notes are meant for the presenter who is giving the presentation. They are not meant for the audience. तो audience को notes नहीं दिखते हैं. ये सिर्फ presenter के लिए है कि उसको अपने कुछ points याद रखने के लिए he or she can add up some notes in between.
right? So these are all types of views which comes in one more is slideshow view is the full screen view where everything you can only see the slide portion on the full screen and there's no editing possible in this slideshow view. आप कुछ भी change नहीं कर सकते हो slideshow में, so you can only see this. Fine. और एक और ऑप्शन होता है हैंड आउट पेज व्यू, इसमें it will display the slides on the page when it will be that you want to print. कि मान लो अगर मुझे एक पेज के ऊपर 2 स्लाइड्स का प्रिंट आउट चाहिए तो वी कैन ऑलवेज सेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर व्यू, राइट? मल्टीपल स्लाइड्स कैन बी प्रिंटेड ऑन वन पेज. फाइन. So these are all different views which are important. ये views पे बहुत बार क्वेश्चन आता है फाइनल एग्जाम में. You must know the uses of each and every view. और काफ़ी सारे वैराइटीज के क्वेश्चन आते हैं. कई बार व्यूज डिफाइन करने को आ जाते हैं. ये बस यू हैव टू नेम द व्यूज ओनली. समटाइम्स इट कम्स इन द ब्लैंक फॉर्म कि कौन सा व्यू है जिसमें आप स्लाइड्स को अरेंज कर सकते हो इजीली. तो यू हैव टू गिव आंसर लाइक स्लाइड सॉर्टर व्यू इज द राइट आंसर. फाइन. सो यू मस्ट नो ऑल दिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है. देन अच्छा, before moving on, I just want to tell you one more thing, that from 22nd of this next week, 22nd of July, we are going to start with that assessment, periodic assessment exams. और उसमें आपका spreadsheet वाला chapter आएगा. So go through the things. If you find any doubt, any problem, we can discuss tomorrow again, right? तो 22nd से आपकी डेट शीट वगैरह आज पोस्ट हो जाएगी सब आफ्टरनून में, और syllabus and everything will be posted today along with the date sheets. Fine. चलो आगे करते हैं. This is a master view, and master view is again very important component. See, जब हम presentation बनाते हैं उसमें एक problem बहुत बार मैंने देखी है कि like if you create a presentation, मान लो उस presentation में 100 slides बना दी हमने, and later on we found out that यार ये जो हमने slide के हर slide के जो title हैं, the size of the title is not accurate. You want to increase the size of the title. तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमें हर स्लाइड में जाना पड़ेगा, हर स्लाइड में जाके टाइटल का साइज इंक्रीज करो, या उसका टेक्स्ट, मान लो उसका कलर जो है प्रेजेंटेशन के टाइम पे इतना अच्छा नहीं आ रहा, बाद में यू कम टू नो एंड नाउ यू वांट टू चेंज दैट कलर इनटू सम डार्क कलर. तो हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमें 100 स्लाइड्स में जा जाके वो सारे स्लाइड्स के हेडिंग को चेंज करना पड़ेगा, right? So this we can avoid because we can use the slide master view. In slide master view, you just go to the slide master. आप जो भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, जो भी स्टाइल यू वांट टू चेंज, जो भी बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या कुछ भी कलर कॉम्बिनेशन चेंज करने हैं, टेक्स्ट के हों या कुछ भी हों, so you can change that thing in that one single view only. ठीक है. तो मास्टर स्लाइड में आपको एक ही स्लाइड का व्यू दिखेगा. अब जो कुछ वहां चेंज करोगे इट विल बी अफेक्टेड ऑन ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन. ठीक है ना. तो मतलब मगर आप मान लो आपने हेडिंग ही इंक्रीज करना है या उसका कलर चेंज करना है, तो टाइटल का जो भी कलर चेंज करना है वो टाइटल वाला आप स्लाइड मास्टर व्यू में जाओ, वहाँ पे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं, कैन जस्ट चेंज द कलर and that will be affected to all the slides. So it's a very important and handy tool. तो जब भी प्रेजेंटेशन बनानी है सबसे पहले आपको स्लाइड मास्टर में जाके फॉर्मेटिंग करनी चाहिए, then you start working on the presentation, right? So this is very important view. Next we have color and grayscale option. In this option you can simply see के by default color हमारी स्लाइड जो कलरफुल दिखती है. अगर आपको ग्रे स्केल में देखनी है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट में या ग्रे स्केल में कैसी दिखती है, दैट यू कैन चेंज द कलर फॉर्मेट, राइट? सो दिस ऑप्शन इज अवेलेबल टू अस. Then some more options like sidebar. This a tick over here shows that the bar is visible. Sidebar वो है जो इस तरफ राइट साइड में जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी ऑप्शन आप ओपन करते हो जहाँ पे दिखती है. If you want to hide those slide bar, if you want to remove that sidebar, you just click here, the stick will be removed. That means that slide bar will not be visible in the normal view.
Same way, slide pane is on the left side where you can see that small miniature forms of slides. So वो अगर वो पेन ही आपको हटाना है आप इसको select कर दो, वो हट जाएगा. Similarly, toolbar option is there from where you can hide and unhide various toolbars. जैसे आपको ये ऊपर दिख रही है formatting toolbar या standard toolbars, इनको आपको hide करना है तो ये toolbar में जाके आप hide कर सकते हो. ऐसे status bar you can hide, or drawing toolbar is you can add up or hide, right? Status bar के लिए we have that separate option over here. Similarly, rulers can be hidden. You can hide the ruler. Ruler जो ऊपर दिखता है horizontal and vertical, two rulers are shown. That can be removed also. You can add up grid lines in between if you want to. तो grid lines basically आपको छोटी छोटी lines दिखेंगी पूरी slides के ऊपर horizontal and vertical. उससे आप जब कोई like if you want to place a image place करने में easy होता है. You can easily make out के center कहाँ पे है. ठीक है, तो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए ग्रिड लाइंस यूज करते हैं ऑलवेज. इवन दिस ग्रिड लाइंस इफ यू ऐड, वो प्रेजेंटेशन जब स्लाइड शो व्यू जो है उसमें आपकी ग्रिड लाइंस नहीं दिखती हैं, वो सिर्फ नॉर्मल व्यू में दिखती हैं, राइट. Likewise, then the last option is header and footer. You can always add a header and a footer to the slide. Like if you want date on every slide, so you can add it from here. Or you want to add a name of a school like Cambridge International School, you want on every slide at the bottom, तो आप header और footer में जाके डाल सकते हो, right? As you do it in Word also, in that writer software also. Fine, so let's just have a look on all this in the software only. So first let's see the views. You can see the tabs of the views are also given, although it's also lies in the view tab. व्यू टैब में भी है और यहाँ पे भी है. ये नॉर्मल व्यू है, ठीक है. मैं एक काम करता हूँ, मैं I'll open one new presentation and I'll open one template ताकि हमें रेडीमेड टेक्स्ट वगैरह कुछ मिल जाए. चलो यही ले लेते हैं. Okay, so we have now text also. Okay, so let's see the views. This is the normal view. When you click on outline, you'll find only the text of the slides. ये slide number 1 की lines हैं, ये slide number 2 की text है, ये 3 का lines है. Then these are all different points that we have entered into the slides. We'll not see the slides, we'll only see the text lines. Then we have notes pane. As I told you, notes we can add up here. ये notes सिर्फ presenter के लिए हैं. Audience will not be able to see these notes even if we have the slideshow. Then this is handouts view where you can see कि print out के बाद आपको कैसे ये स्लाइड्स जो है वो फॉर्मेट नज़र आएगा. अगर दिस इज सिंगल स्लाइड, देन 2 slides, 3 slides, 4 slides on a page, 6 slides on a page, and 9 slides on a page. So for printouts, you can simply see what all format you want to have it. Now you can print, and then once you print, you'll get 9 slides print out on a single page. Fine. This is the slide sorter view from where you can simply arrange the slides. It's the best way of arranging. This view is best suitable for arranging the slides. Exam में question आता है कि which view is the best suitable for arranging the slides, we'll write slide sorter view because it's easy for us to move a slide from one place to another. ठीक है, ऐसे आप slides को आगे पीछे move कर सकते हो, arrange कर सकते हो. Fine. And one more view is the slideshow. Slideshow view आपको यहाँ पे दिखेगा. You go to the slideshow tab on the top or press F5 from here. Yeah, you can also see it there in view tab. View tab में भी आपको slideshow मिल जाएगा. Just click on this. So this will show you the complete slide on the full page. In full, no other things will be shown. Only the slide will be shown. Right click and end show to cancel this. Fine. इसके बाद व्यू टैब में ये मास्टर है. I'll go to master slide.
मैंने बताया था जैसे मान लो हमारे पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं. I want to change this text of the heading, the title of every slide. So यहाँ से आप उसको जैसे this is the 40 size by default. When you apply a design or a template तो हर साइड स्लाइड पे सेम इफेक्ट होता है. जैसे टाइटल सबका 40 साइज का होगा. If you change into 28, I'll make it a little smaller, and then you can also change do other formatting. मैं इसको रेड कर देता हूँ, right? So do the formatting over here. Once it is done, click on this close master view. Now you see हर slide पे same effect आ जाएगा, right? So this is quite helpful option. Fine. So that's it. Then this is color. By default it is color. Grayscale में वो color effect नहीं दिखते हैं, सिर्फ grayscale option दिखेगा. Some of the options in the software is not working. आज मॉर्निंग में भी यही ट्रबल थी. ग्रे स्केल में वो दिखा नहीं रहा है. There is some problem with the software. So anyhow I'll make out and I'll let you know. अभी वो ग्रे स्केल करो, ब्लैक एंड वाइट करो, तब भी वो कलर स्कीम ही दिखा रहा है. ये अपने एनोटेशंस मैं डिसेबल ही कर दे रहा हूँ. ओके. अदर ऑप्शंस आर स्लाइड बार. इफ यू क्लिक दिस, ये जो द स्लाइड बार थी वो रिमूव हो गई. You want to bring it back, click again this properties वाला जो slide bar है, it will come back. ऐसे this is to hide the slide pane on this left side. Click the option again to bring it back. ऐसे ये बहुत सारी tool bars हैं. If you want to add, you can just click on that. और ये जिस पे टिक लगे हुए हैं वो पहले से हैं हमारे पास. जैसे standard toolbar is there on the top. Formatting toolbar is also there. Right, drawing toolbar is also there. Line and filling toolbar is also there. The presentation toolbar is also there. ये छोटी छोटी सी दिख रही है, ये presentation की इतनी सी है, ठीक है, एक ही जगह पे फाइल अप करके रखी हुई है. If you want to remove or hide or any want to bring a new toolbar, you can just select from here. ठीक है. ऐसे ये status bar है, नीचे जो status bar को hide करना है तो that we can do from here. Similarly, ruler bar is also there to remove. By default ruler नहीं होते हैं, आपको चाहिए तो आप यहाँ से select कर लो. This is that grid line option. You can see small lines on the slide. और ये grid lines आपको सिर्फ normal view में दिखती हैं, slide show में नहीं दिखेंगी. इसका use यही है कि अगर आपको कुछ place करना है तो you can also easily make out where is the location of it. सेंटर या फिर डिस्टेंस अगर दोनों तरफ देखना है तो ग्रिड लाइन से थोड़ी हेल्प हो जाती है. राइट. टू रिमूव दिस, क्लिक ऑन दिस अगेन. देन वी हैव header and footer option. Now header and footer option allows us to add one header as well as footer on the slide, each and every slide of this presentation. Like if you want to add a date and time on every slide, you just click on this, put the date over here or time over here, so that will be applied to all the slides. यहाँ पे एक वेरिएबल ऑप्शन है. वेरिएबल अगर सेलेक्ट करते हो तो वो सिस्टम डेट उठाता है जो कंप्यूटर की है, और एवरी टाइम यू ओपन अप दिस फाइल तो आपको वो ऑटोमेटिकली डेट को अपडेट कर देगा. राइट. Similarly, we can add up a footer. Footer comes on the lower part of the slide. Headers comes on the top of the slides. Right. We can also add up the slides number at the bottom. ये नीचे footer पे slide number add हो जाता है यहाँ पे. And just do all the settings and click on apply to all. Right. Again, this option is not working in my computer right now. There's some problem with it.
मैं इसको एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, ठीक है। देयर इज सम प्रॉब्लम विद द सॉफ्टवेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ। So this is header and footer, that's it from this place. इसके बाद next is your insert tab. Insert tab is also important tab where we can insert different type of objects into the slides. Like इसमें जो सबसे पहला है वो option है slide का। Slide मतलब if you want to add up a new slide into the presentation, that we can do from here. और remember, आपको जहाँ पे स्लाइड ऐड करना है जस्ट उससे पहले वाली स्लाइड को सेलेक्ट करना ज़रूरी है। इफ़ यू वांट अ न्यू स्लाइड आफ्टर दिस सेकंड स्लाइड, दिस वन, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। 3 और 2 के बीच में चाहिए तो आपको 2 पे क्लिक करना है, 3 पे नहीं करना, राइट। यू विल जस्ट क्लिक ऑन 2, गो टू इंसर्ट, क्लिक ऑन दिस स्लाइड, यू विल गेट अ न्यू स्लाइड ओवर हियर। और द अदर वे इज राइट क्लिक एंड यू गेट द न्यू स्लाइड ऑप्शन। रिमेंबर, ये न्यू स्लाइड इस जो भी आपने करंट स्लाइड पे क्लिक किया है उसके बाद आएगा, पहले वाले पे नहीं आएगा, राइट। विशाल विराज तुसी चैटिंग करते पे हो? आई थिंक आई शुड डिसेबल द चैटिंग आल्सो। डोंट वेस्ट टाइम लाइक दिस। चलो, सो इन insert tab we have this option, and insert the other option is duplicate slide. Duplicate slide works when if you want to create a copy of one slide. So just select the slide that you want to make a copy of. तो जिस स्लाइड की आपको कॉपी चाहिए उसको सिलेक्ट करो। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर रहा हूँ so that you can see. If you want a copy of this customer wishes वाला slide, so just go to insert, duplicate slide, हमारे पास 2 स्लाइड बन जाएगी। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपको similar kind of thing you required on the second slide, so to just create a duplicate and then change on the second one, इसको आप change कर लो, right? So you can change, fine. So in this way we can create duplicates, and the other way is right click करो, आपको it's not option is not here, otherwise it was there in PowerPoint, यहाँ पे नहीं है। Other things are if you want to insert the date and time page, this is the same that header footer option। इसको क्लिक करने पे भी वही ऑप्शन खुलता है header and footer वाला, so you can apply date and time and page. Then the next important one is hyperlinking. If you want to link, put a link in the website, which link is for some other external file, or if that link, if you want to link a file from the internet over here, जैसे कोई वीडियो का लिंक आपको शेयर करना है, तो आप YouTube या वो लिंक जो वीडियो है ऑनलाइन जो भी उसका लिंक निकालो, just copy that link from that place and then that can be added over here. अभी करके दिखाता हूँ आपको हाइपरलिंक। पहला ऑप्शन यहाँ पे है इंटरनेट का, तो ये टारगेट में आपको वो इंटरनेट की फाइल का URL डालना पड़ेगा। सो आई विल वन वन थिंग, आई विल कॉपी the URL of one of the videos I have given. I'll just copy it from here and paste it here. तो ये कुछ वीडियो मैंने अपलोड की थी ये आपके लेक्चर्स की, तो उसका URL यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। सो क्लिक अप्लाई, व्हेन यू क्लोज दिस ये आपको लिंक मिल गया, राइट। सो एट व्हेन यू रन द स्लाइड, जब आप स्लाइड शो रन करते हो तब आपका ये YouTube का लिंक जो है वो वर्क करेगा। व्हेन यू क्लिक ओवर हेयर
will straight away go to that YouTube link, right? Similarly, we can add up some more options, like if you want to add up a document. So just click on the document. From here, you have to select the path and choose the document that you want to add up, any document. Downloads, just you have to browse for that, right? So click on that and click open. So that path will be added, right? That URL is added कि वो document कहाँ पे है. Click on apply. Close. Right? So that URL is also added over here. Fine. So आप इसको click करके वो वाला document खोल सकते हो. Fine. So this is how we can add up hyperlinks. Then we can also add up pictures. If you want to add a picture, you have two options available here. One is to picture from file and second one is to scan. The scan option तब वर्क करती है जब आपके पास scanner attached है system पे. So you can simply scan any document with the scanner and that can be directly uploaded over here in the slide. And the upper one is if you want to add up a picture which is saved on your computer. So just click on this and then browse for the picture that you want to save. Right? So find out the picture, like these are some of the pictures that you just wish to add up. Fine. So जैसे जो भी picture डालनी है, I don't have any picture. Let's mean if there is any picture on the desktop. No, I don't have any extra picture. So you just browse for the picture that you want to add and then click on open. So that picture will be added, right? Okay. What I have done is that I have selected that YouTube, that figure. So वो उसकी background में image लगेगी, right? So you just have to click on some fresh file, then only it works. So let's do it again. I'll take a new slide. Now I'll go to insert, picture from file, choose the picture, and that will be added. Fine. So delete that image, just click on the image and press the delete key from the keyboard. तो ऐसे ही आप tables add कर सकते हो. Just click on the table, number of columns you specify, number of rows you specify here. Click OK. That table will be added. And then later on, you can of course change the designs from this properties option, right? Designs you can change. And here we have the tables property window from where you can simply increase the rows or increase the columns, insert a column, insert a row. Like this, you can add up new columns, you can add up new rows also, and then you can remove the row or remove the column option. ठीक है, ये so properties are there. We'll do these properties one by one after that. So that's how we can add up a table and then do the formatting of it. You can change the formatting from the sales. Right, बाकी और भी options हैं, like this is to change the lines, the colors of the lines or the size of the lines. And from here we can change the color, and from here we can put up the background colors. So likewise options are there. Fine.
let's see the book. Anything left over there, we'll just go through. Okay, insert, we have done inserting slide, page number, date, time, picture, sound and hyperlinks. हाँ ये था टेबल के बाद charts भी we can add up. We can also add a movie and sound. We can also add a audio video file with the help of these options, right? So that's it from my side today. So I'll end up right now, and we'll start up with this format toolbar tab next time. And kindly go through that spreadsheet, right? Go through that spreadsheet chapter, and if you find any problem we can discuss next time. बाकी उसमें मैं बता देता हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये होती हैं कि in every sample paper, if you see, or previous year's paper, if you see, you'll find one important question that is based on the functions and formulas. जैसे आपके पहले भी आते होंगे कि आपको शीट दी है and then you are asked to write the formula which you want to enter in that particular cell, so that the sum can be done, or some maximum value you want to find. और फॉर्मूला कैसे लिखोगे वो उस पर क्वेश्चंस होते हैं. एक आध ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपको हर सिंपल पेपर में मिलेगा. तो प्रैक्टिस दैट. देन ऑल्सो practice for all sort of definitions, then keyboard shortcuts, then the steps are very important. Remember that whenever you want to give a step देना ज़रूरी है, right? So give a full steps. So go through, and then if you have trouble we'll discuss next time. Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे. Excuse